Let's start with this the program that we are thinking of, the generative AI development training. Also, behind the name, it already suggests the idea what we have. We know like our the student at DC and the student in nearest engineering colleges of Bihar is lack of fundamentals and the code programming concept, and it's very difficult to catch up with the production that in the industry currently it's happening. So the best way it can be to learn the shortest path of those learnings is vibe coding. To do vibe coding to achieve something in the development. So it came from the basic idea. Let's start development with the student of nearest engineering colleges and give them a basic of the generative AI development training so that they can build some product, cool stuff in their college time. And once the college is finished, so they will have a better experience of building any kind of stuff, whatever comes in their mind. So this is that will be the flow chart presentations on the technology tools, the workflow that we will be following, how to develop any kind of project. Suppose Ankit have idea to build something like Netflix. So how Ankit will build the Netflix because he don't have any other experience, correct? And he don't have any prior 10 year of experience to build the system design, build the workflow, build the backend, front end, database structured, and how to make those systems scalable. So it comes from where like you wanted to do something, but you don't have much resources in terms of experiences, in terms of infrastructure, uh, in terms of background of your development. So where it came like, hey, why not we can utilize generative AI things to build some cool stuff that in our mind. So we wanted everyone here to like build some cool stuff using AI, prompt engineering, how to make prompt engineering better, and how to build project on top of those vibe coding that we are gonna learn in the next 16 hour, like in the month of training. So starting from this as this UI shaped, there's a in and there is a chat icon and there is a mind and there is some product settings and you learn on the you virtualize of AI. So let me scroll it. Only have five, six that it's not a boring PPT of a college. So let only have the thing to let you know how this generative AI works, how it's working, and you have to work along in the development where you will be doing for next 30 days. So it will work like this in the MithilaStack organization on GitHub. There will be two repositories, one built by Abhishek, another one built by Ritik, and you will guys have access of those repositories along with the cycle of this next 16 days or you can say 13 days. You guys have access of those repositories and you can fork or clone that repository and can build some cool stuff there. Like Ritik and Abhishek will guide you through how to do prompt engineering, how to get fundamentals if to utilize with those kind of development. I think, Ankit, you guys have any problem while using English language or Hindi will be better? Ankit, No, we are comfortable in English, sir. Hindi. English, sir. We are comfortable in Okay. English. Correct. I think you guys are in final year, so it's a basic expectation. So you must know the basic programming, HTML, CSS, C++, how the programming works. So the generative AI lifecycle work like how to build artificial engineers and how to basically in the back end how to use AI. It's not about the AI engineer. It's about if you are get to know how to use AI in your development or day-to-day activity or of your software development lifecycle, you can easily become an AI engineer. It's just a terminology or name that is different. At the end matter is, are you guys able to use AI to build something that you guys wanted actually on any project? Once you achieve that, you're already an engineer. So it will be like the native has 4 phases. One is the foundation and setup, where you get to know what is the LLM, what is the API on top of those LLM, what is RAG, what is factor database, what is embedding. And there are a few concepts in here that if you can learn, it will help you to gain a basic fundamental of what AI is. And there is a core modeling understanding, like nowadays we are seeing ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Cloud. So these are the LLM. Basically, model trained to query on top of your questions depends on your requirements. So suppose if you wanted to build an image with AI, you're gonna ask uh, models that is building image. If you want to build videos, then you will gonna ask the models like Sora to create a videos.
So it depends on the LLM, which data LLM has been trained on. And based on that data trained on, you can have a requirement. Hey, this LLM will be working for image generation. This LLM will be work for the video generation. So this is how you sort listing the LLM. Suppose you wanted to build something like resume maker, like Gautam is here and he wanted to build a resume, but not with the manual words or Excel or manual PDFs. He wanted to build with AI. So which LLM like Gotham will be used? So he will have to do brainstorming like which LLM will suit Gotham requirements. Like he wanted a proper image, text, experiences with different kind of the models, different kind of resume available in the open source. And then suppose Gotham has selected Gemini model, Gemini 2.5 Flash to build a resume. Then it's like a trial and error. Which model is suitable for the requirement? You have to give a trial to all different models. The phase two is the core modeling understanding, like how what is the LM, what is the prompt, what is the API on top of those prompt on those top of LLM. And the third one is the advanced customization where you are utilizing RAG. RAG is a retrieval augmented generation. Basically, it's on top how to query LM to give you a desired result. Suppose you wanted to build your AI avatar. So the how to do prompting. So so that the result outcome is more satisfactory in nature. The same prompt you have put it on it. So where the RAG comes in the front end part to process those your initial prompt to a prompt where it's gonna give you the desired result. So it's come like that are a RAG enabled application prototype. So nowadays whatever you're saying like ChatGPT, Gemini or Cloud, so all of them have a RAG on the front end side to process those prompt into a detailed prompt that can understood the desired outcome of any users. And the last one is the application and deployment, where you are orchestrating your application. Suppose right now you guys wanted to build a resume builder. So you have done the coding, you have set up the React project, you have set up the Node Express project, and then you guys have given a prompt. Hey, I wanted to build this. After the AI generated all the codes, you are running locally, and there are some issues. You again prompting something. Hey, this is issue I am finding with this files. So that's how you sometimes came into picture where everything is running fine. But you must have the knowledge of fundamentals because when you are doing with AI, so more time will take on debugging the subtle, smaller issues. So once you have finished all the work, the last comes is the deployment, how to deploy those applications. You have built a resume maker, but you wanted not to publish your project so that everyone on your college can get a resume for free. Suppose you wanted to deploy on a website of PC Darbanga slash for your project name, the resume builder, where anybody of student of PC can get a resume built with just few prompt, just few input data like name, experiences, and it will create a beautiful resume for them. So how to build those kind of project with the AI at the backend? So it has four phases of the proper development, and the another one is the what actually you required for working with AI. So there are tools, their value proposition of that tool. So if you wanted to build a resume maker thing, you need a front end like all the where you will take all the inputs and the server like Node.js backend to process those input and build a API with the desired outcome that you wanted. And at the end, that backend will be responsible for calling to Gemini service or ChatGPT service to give you a desired result. And then you again shortlisting all the JSON according to your needs, and you are putting in the front end. Git, I think everyone know Git is the more like a runtime to see what are the commits, what are the repository, what is the branches, what is the all the history uh, of that project. If you are, we'll make sure like everyone know GitHub at least, so that you guys can have a proper how actually any company work with GitHub. And another one is the ID. You can choose like everyone has a VS Code, but nowadays Google has released one ID is anti-gravity, and that is also a kind of open source and free for now. So you guys you all can install uh, that and you can utilize in the next 1 month. So there are dependency we will share in the group like the anti-gravity that you have to install. And this Jupyter, I don't think it's need required because we are not going to deal with Python.
And how the LM and architecture works. So it has a four five things in the nature. So any LM nowadays is a kind of data that is trained on a particular set of text data format, and it give you the output and the text file. But suppose you guys have a question how it generate images. It's images also a vector embedding that rendering on your front end. And how the LM work is with the token. So how Google will know like, hey, you have utilized your services pre-credit. So it's at the backend is a token that is responsible for managing LM queries when you are doing it. And the prompt engineering, it's a beautiful thing. The prompt engineering, it's kind of more how, what is your creativity in terms of thinking, how much you are capable of thinking something. Creativity as per your requirement is, suppose your requirement is when someone is uploading resume, you need to fetch images from that resume and you can have to build a avatar. So so how much you are beautiful enough to think the creative prompt for your requirement can be. So one of the uh, best thing you can learn is the prompting while developing to fulfill your desired result, like what you actually wanted to build, and are you giving the prompt that actually give you the desired result. And it's a kind of evaluation you will not get in a single day. Once you have spent like 10 days 15 days on that anti-gravity or any LM, you will get to know like how it's behaving to yourself, how your how you are achieving your desired outcome from that chat GPT. And then context learning is uh, it's more like it's learning from the prompt. So at the front end you are understanding that you are giving prompt to ChatGPT or Gemini, but at the back end Google team or ChatGPT team is understanding, hey, this guy uh, doing prompting like this is capable to know what the context you are thinking of. So in context learning is for the people who is running LMs at the back end to understood your requirement better and give you a desired outcome. So suppose you wanted to uh, have a salary for 1st January. So how much uh, desired you achieving to the process when you are giving a prompt? Hey, can you give a salary for 1 January? And is it giving you the exact answer? So where it comes then context learning for chat LM backend team to process those your request and giving you the desired result. And the last one is the hallucinations. It's a common things with nowadays LM, but nowadays it's quite stable. But if you are still thinking of 1 year back when ChatGPT or newer AI is, so that time they have a lots of hallucination. If you tell hey 2.2 plus 3 is 6, so he will understood hey actually 2.2 plus 3 is 6, but it actually no. So but this process is common for all the LLMs. But nowadays it has more censored data and all the uh, sanitization of output of that LM query is nowadays happening. So it's lessen day by day the hallucinations of any LM. And this is the advanced terms like the I told you the RAG. So RAG is nothing but a framework that retrieves relevant information from an external knowledge base and feeds it to LM to generate more accurate, grounded responses. So it's used by you can also use RAG to give you the exact answer. You don't want to get into trap of hallucinations. So you can implement the RAG in the front end to give you the as desired result. And there is a vector database, or it's nothing but a database to search on vector embeddings. Like you have an image, you have a screenshot of your mobile phone. Now nowadays you are seeing the features of, or you are taking a screenshot and Google is understanding that a screenshot. It's nothing more like a vector database where they are accessing all the vector embeddings of your images, and then their output is like text, and they are calling any API services they have and giving you the result. Hey, actually this picture is of this, and the embedding the same thing that is this. Fine tuning is the another one. Like nowadays most of the better AI is in open source like Llama, DeepSeek R1. And suppose you have a requirement of building to access the user phone and to analyze their data, how much they are able to know. So there are already some models that is trained on those kind of database, but you can fine tune them. Fine tune means you wanted to do something customization for yourself. So nowadays if anyone is here using Python, so
when you are installing any kind of libraries like NumPy or Pandas, so there is certain you can customize the processes that you can customize there. So it's just a fine tuning of LMs and the low rank adaptations. It's for LM again. So suppose you have query something. Hey, can you give us what is the weather today of Darbhanga? And then at the back end they have uh, output result in terms of ranking. So one ranking is it's a 17 degrees Celsius for now. Another one is it's a it is 20, it's a 17 degrees Celsius, but it will be decreasing after 1 year, 1 month, sorry, 1 hour is 16 degrees Celsius. So it's like you have get a like 4 5 or rank wise the output from that LLM, and you are sorting those which adaptation which result you will show to the user. It's a low rank adaptation, whichever is better. You wanted to show your user that responses. Then again, this is the deployment part. So nowadays, most of the LM is available via IP API. So if you guys know what is API, so I think everyone know what is Express. You are building an API. Suppose one is the API that is responsible for giving you the input uh, of your resume, and where you are uploading your resume, and then again it process in the backend and giving you the analytics of that resume. Like is it able to shortlisted in the, for a particular job. So what happened is actually you are using any kind of services at the backend, Gemini, DeepSeek, or ChatGPT, where you are utilizing API for them. And that API are giving you one endpoint, the response, and the response type, and the output type. And again is the deployment part. Like suppose you have a build application. Now it's come to the deployment. How you will do deployment of those application. So the last part we will be going through is the deployment part. So I hope everyone is there. Like 10 12 people is here. So you must try to build a project along with Ritik and Abhishek, and at the end we will deploy into a link like any kind of domain like MithilaStack and Cohort-02 by your name like Ankit, and anybody you guys can search like what the project you have built, and we will deploy your project there. So आई थिंक सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो अभी का डेवलपमेंट पीरियड है वो आज से 2 साल पहले जो डेवलपमेंट पीरियड था उससे काफ़ी अलग है, और अभी के समय में यदि आप एआई यूज़ नहीं करेगा अपने डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएगा जिस तरह से डेवलपमेंट फास्ट हो रही है। क्योंकि यदि आप भी आज एआई को अपने डे टू डे एक्टिविटी में डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं और उससे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ठीक है, ये मुझे एक एपीआई चाहिए जिससे मैं रिज्यूम अपलोड करूं और वो मुझे एक आउटपुट दे जहाँ पे मुझे पता चले कि मेरा रिज्यूम उस जॉब डिस्क्रिप्शन और उस जॉब के अगेंस्ट में कितना सूटेबल है, क्या रैंकिंग है मेरे रिज्यूमे की। तो इस तरह के जो स्मॉलर स्मॉलर यूज केसेस है उसको माइंड में लेके आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ एंड देन ट्राई टू बिल्ड यूजिंग एआई। तो अभी जो टुमारो से जो सेशन स्टार्ट होगा वो ऋतिक का होगा, जिसमें वो आपको एक बेसिक आईडी इंस्टॉल कराएंगे। गूगल का एक एंटी ग्रेविटी है जहाँ पे वो खुद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे विद प्रॉम्प्ट। वो प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और आपको मीटिंग में रहना होगा। आप देखोगे किस तरह से प्रोजेक्ट बनता है, जहाँ पे आप एक्चुअल में प्रोग्रामिंग नहीं करते हो, एक्चुअल में आप वाइब कोडिंग करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, कि हमें ये करना है तो ये कैसे करें, ये प्रॉब्लम होगी तो उसको कैसे फिक्स करें। तो जो आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो बाय योर सेल्फ ओनली। दैट वी वांटेड हियर कि जो भी यहाँ की कॉलेज की फाइनल फाइनल ईयर के ग्रेड्स है वो एटलीस्ट जो भी प्रोजेक्ट अपने माइंड में सोच रहे हैं वो बना सके। वो अभी आपके पास एक्सेसिबिलिटी है कि आपके पास इस तरह की आईडी है जो कि आपको एआई देती है, आप उससे बना सकते हो। सो दैट वी वांटेड एवरीवन टू कि आप लोग इसको यूटिलाइज करिए, और जो भी सेशन है उसमें 5 ही 10 ही हो, लेकिन वो काइंड ऑफ एक्टिव हो और वो वहां से सीखे कि कोई प्रोजेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सो एट द एंड व्हाट वी रिक्वायर्ड इज आप सभी के गिटहब में एक रेपोजिटरी होना चाहिए, जो कि एक फॉर्क होगा जो कि ऋतिक और अभिषेक होगा करेंगे यहाँ पे। आप उस पे कुछ खुद का बनाओगे। यदि आप पैरेलली खुद का बनाना चाहते हो वो बनाओगे, बट यूज केसेस डिफरेंट होगी। और एट द एंड जब हमारी चीजें ये इंटर्नशिप खत्म होने वाली होगी, तो हम हर प्रोजेक्ट को एक्सेस करेंगे और उसको डिप्लॉय करेंगे एक पर्टिकुलर लिंक पे, जहाँ पे आप ही शेयर कर सकते हो कि ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है। तो हम ये चाहते हैं, एंड लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी
क्वेरी क्वेश्चन कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे डिप्लॉयमेंट होगा, कैसे नेक्स्ट जो डेज है वो चलने वाले। अंकित, यू कैन अनम्यूट एंड हैव अ वीडियो सेशन। और कोई भी क्वेश्चन है इन लोगों की, यू कैन टेक एंड लेट मी नो। सर अब डॉकर भी बताएंगे। मतलब ये डॉकर में कैसे ये इमेजेस क्रिएट किया जाता है ये। जैसे कि अभी मान के चलो कि आपने एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट लिखा रिएक्ट का, नेक्स्ट का, बट आप जो चैलेंजेस आई थी डॉकर जब स्टार्ट हुआ था लाइक 2010 में इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ था, वहाँ चैलेंजेस ये थे कि आपका लैपटॉप में तो चल रहा है बट वही सेम कोड आपने अपने कलीग के लैपटॉप में दिया, वहाँ चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? कि जो आपकी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी थी, यदि आपके प्रोजेक्ट में नोट 14 का रिक्वायरमेंट था लेकिन आपके जो कलीग हैं उनके डिवाइसेस में नोट 16 है, आपके जो डिवाइस है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है, उसका उबंटू है, लिनक्स है। तो ये मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जो कि हर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जिसको डॉकर ने सॉल्व किया है कि जो भी आपका ओएस ले रहा है वो एज ए कोड होगा। अब वो कोड क्योंकि सेम ही होगा, तो कोई भी उस कोड को जब रन करेगा तो वो एक सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा जो कि जरूरत होगी उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, और वो इंडिपेंडेंट होगा आपका लोकल जो टेक स्टैक है, चाहे विंडोज है। तो नॉर्मली क्या होता है कि यदि मान लो एक रिएक्ट और नेक्स्ट या कुछ भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो उसका एक डॉकर फाइल लिखा जाता है, जिस डॉकर फाइल में आप मेंशन करते हो कि ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसमें कौन सा एलटीएस लेना है, कौन सा ओएस लेना है। जैसे कि एज एग्जांपल एक उसमें दो तीन 10 लाइन का कोड होता है मेजरली। आप एक उबंटू का इमेज ले तो लाइक 24 एलटीएस। फिर ओएस में क्या करते हो, आप कॉपी करते हो जो आपका लोकल में जितने भी कोड है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी करते हो। फिर आप npm रन बिल्ड करते हो, जैसे लोकली npm इंस्टॉल करते हो, npm रन बिल्ड करते हो। उस तरह से सारे स्टेप्स को आप उस डॉकर फाइल में लिखते हो। वो आपका एक प्रोग्राम ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका उस प्रोग्राम जो आपने रिएक्ट में लिखा है उसको डिप्लॉय करने के लिए। और ये काफी ईजी है कोई भी प्रोजेक्ट को डॉकराइज करना, डॉकर का इमेज करना। एक बार वो हो गया, आप कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। एक बार आपने उसको आपके लैपटॉप में चला गया और आप किन्हीं भी अपने कलीग को दोगे, उनको सिर्फ यही करना है, डॉकर इमेज बिल्ड रन, डॉकर इमेज रन, और वो एज इट इज उनके पीसी में भी चलेगी, क्योंकि वहाँ पे ओएस की डिपेंडेंसी नहीं होती है। और जब हम जब कोई प्रोजेक्ट समअप होगा तो हम जो डिप्लॉयमेंट करेंगे वो भी डॉकराइज डिप्लॉयमेंट होगा। नॉर्मली अभी आप लोग क्या करते होंगे, यदि कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो npm इंस्टॉल करते हैं, npm रन डेव करते हैं, npm बिल्ड करते हैं, और यदि डिप्लॉय भी करते हैं तो कोई कहीं पे। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कितने लोगों ने कोई भी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया है अभी, कोई भी लिंक पे, टेम्परेरी लिंक पे कोई सर्विस यूज किया है? एनीवन है? यस सर, स्ट्रीम लीड पे। एनीवन है? कहाँ पे किया आपने? स्ट्रीम लीड। अच्छा, आपने करा हुआ है। तो आपने जो डिप्लॉयमेंट करा था वो कैसे किया था? वो डॉकराइज डिप्लॉयमेंट था या नॉर्मल आपने करा था? नॉर्मल सर, गिटहब से नॉर्मल। अच्छा, गिटहब से करा था फिर। तो वो जो डिप्लॉयमेंट होता है उसको हम बोलते हैं मोनोलिथ डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे आपका एक प्रोग्राम आपने लिखा और आपने अ, एक सर्विस यूज किया, चाहे रेंडर हो या वर्सल हो, बहुत सारे जैसे हेरोकू हो, आप उस पोर्टल का यूज करके आप डिप्लॉय करते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो पोर्टल आपके बिहाफ पे एट द डिप्लॉयमेंट उसका डॉकराइज ही होता है। वो इमेज ही बनाते हैं आपका पोर्टल, लेकिन आपको पता लगता है कि वो नॉर्मल डिप्लॉयमेंट है यदि आप कोई भी पोर्टल यूज करते हो। बट हम ये जो प्रोजेक्ट होगा इसका जो डिप्लॉयमेंट हम करेंगे वो डॉकराइज डिप्लॉयमेंट होगा, जहाँ पे मैं उसका डॉकर फाइल लिखूंगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा उसके सारे रिक्वायरमेंट्स को बिल्ड करने के लिए, ओएस को उसको रन करने के लिए। फिर मैं उसको एक डॉकर कंपोज राइट करूंगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा उसको कौन सा पोर्ट पे चलाना है, क्या क्या इन्वी उसको देना है उस पोर्ट को। और इस तरह से देखो डिप्लॉयमेंट होती है। और लास्ट में जो आप देख लो सर्वरलेस स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, दो तरह से डिप्लॉयमेंट होती है। एक होता है सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट, एक होता है सर्वर। सर्वर में क्या होता है कि आपके पास एक लैपटॉप है सपोज करो, जो कि हर वक्त उस चल रहा है 24/7, आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो उसको, वाईफाई दे रहे हो, इंटरनेट, और वो चल रहा है। आप कभी भी कॉल करोगे उस पे, उसके आईपी पे हिट करोगे तो वो प्रोसेस करेगा उस रिक्वेस्ट को। उसको हम बोलते हैं सर्वर डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे वो मतलब 24/7 एक्टिव रहता है। जो आपने उसको, जो उसका रिसोर्सेज है, लाइक आपका एक लैपटॉप है जिसका रैम 16 GB है, एसएसडी 512 GB है, इंटेल क्वाड कोर है, तो वो आप इलेक्ट्रिसिटी दे दो और 24/7 वाईफाई दे दो तो वो एक तरह से सर्वर हो गया। आप उसको एज सर्वर भी यूज कर सकते हो। और सर्वरलेस में क्या होता है कि आप जो 24/7 होता है उसको रन नहीं करते हो। आप ये देखते हो कि आपका जो यूजर है, मान लो कि आपने अभी हिट करा facebook.com पे, तो फेसबुक को पता है कि आप आए हो
तो कुछ वो क्वेरी करेगा, फिर से वो सर्वर को स्टार्ट करेगा, फिर आप चले जाओगे, थोड़ी देर बाद कोई नहीं रहेगा, फिर वो सर्वर डाउन कर देगा। इसको बोलते हैं सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट, जो कि नॉवडेज काफी यूज होती है क्योंकि इकोनॉमिकल होता है। आप ही मानो कि आपका एक डिप्लॉयमेंट है जो कि 24/7 चलेगा, बट आपको पता है कि इसमें यूजर तो आएगा नहीं, तो आप चाहते हो कि मैं उस स्पेसिफिक पे करूँ जहाँ पे मैं मेरे पास जितने यूजर आए, जितना बार वो एपीआई हिट हो या उस वेबसाइट से लोग आए, उस हिसाब से आपको प्राइसिंग हो। तो वहाँ पे होता है सर्वरलेस, जो कि एक्टिव रन टाइम में यदि आप क्वेरी करते हो तो फिर वो स्टार्ट है, आप थोड़ी देर बाद चले जाओगे तो फिर वो डाउन हो जाता है। यदि यहाँ पे कोई रेंडर पे कोई डिप्लॉयमेंट किया होगा तो उसका जो डिप्लॉयमेंट होता है वो सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट होता है। और आजकल मोस्टली जो सर्विसेज आप यूज करते हो वो सर्वरलेस होते हैं। यूट्यूब में जो आप लोग कोई वीडियो अपलोड करते हो तो वो आप देखते हो काफी टाइम लगता है उसको प्रोसेस करने में। तो वो क्या करता है, जो आपने अपलोड तो कर दिया, एंड देन बैकएंड में वो एक सर्वर में रखता है, फिर वहां से एक सर्वरलेस फंक्शन को कॉल करता है जो कि उस वीडियो को प्रोसेस करता है। उसका वो सैनिटाइजेशन होता है, वहां पे सैनिटाइजेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप जो आपका एक तरह से फैंसिंग हो गया वो, कि आप जैसे फैक्ट्री में कोई सामान बनता है तो उसका लास्ट होता है क्यूए। क्यूए में देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया एज एक्सपेक्टेड है, उसमें कोई बग्स तो नहीं है, उसमें कोई इश्यूज तो नहीं है जो कि परसिस्ट कर रही है। तो उस प्रोसेस को सॉफ्टवेयर के टर्म में सैनिटाइजेशन बोलते हैं, सैनिटाइजेशन, जहाँ पे आप ये मेक श्योर करते हो कि जो आपका एपीआई है, जो आपका यूआई है, वो एज एक्सपेक्टेड चल रहा है, जैसा आपने सोचा था। सो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास गिटहब में उन्होंने एक तो रिपोजिटरी पहले से बनाया है, और गिटहब में एटलीस्ट उनको पता है गिटहब क्या है, कैसे काम करता है। यस सर, मैंने बनाया। यस सर, बनाया है। बस अंकित एंड गौतम। एनीवे, सो एट द बैक एंड जब हमारी खत्म होगी तो हम ये मेक श्योर करेंगे कि जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इंटर्नशिप में, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उनका गिटहब आईडी बिल्कुल होना चाहिए, और उनके गिटहब आईडी में एक रिपोजिटरी होना चाहिए मिथिला स्टैक कोहोर्ट 2 विंटर ट्रेनिंग इंटर्नशिप के नाम से, जहाँ पे वो जो अभिषेक और ऋतिक आपको बताएंगे उसका वो रिपोजिटरी होना चाहिए एट दिन, और हम उसको टेस्ट कर पाए कि उन्होंने क्या करा है। सो अंकित, गौतम, कोई भी यहाँ पे हैं जिनको कोई क्वेश्चन है कि कैसे होगा, क्या क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, तो यू गाइस कैन लेट अस नो। सर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताइए ना। इसके बारे में? इसके बारे में सर, जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है। तो ऋतिक, आप एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो इन सबको, कि जो क्योंकि ऋतिक कल से स्टार्ट करने वाले हैं इवेंट मैनेजमेंट, तो उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दो कि क्या उस प्रोजेक्ट में हम करने वाले हैं। हम अभी ईएमएस बनाने वाले हैं, इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम बेसिकली ट्रैक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमें अपने कॉलेज में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। अब इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, वो किस क्लास के लिए हो सकता है, या किस ईयर के लिए हो सकता है, या पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर पेड इवेंट हो रहा है हमारे यहाँ। अगर पेड इवेंट हो रहा है तो कितने प्राइसिंग वगैरह होंगे, कौन सी लोकेशंस पे होंगी। तो ये सारी एक हो गई हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो अगर इवेंट हो रहा है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए सारा। तो इसको मैनेज करने के लिए हमने बेसिकली बनाया है, जिसमें हम उसमें एक्सप्लोर करेंगे जो हम बैक एंड और फ्रंट एंड बोथ साइड रहेगा, जिसमें एक एडमिन होगा जो कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगा। जस्ट लाइक अगर आप अपने बैच के एक एडमिन हो, ठीक है, तो आप चाहते हो जो हर एक बैच में एक ऐसा होना चाहिए, तो आप हर एक बैच के लिए भी कर सकते हो। तो उसमें क्या करोगे कि आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए, फिर आप उसमें उसमें उसको पब्लिश किए, ठीक है, तो उसपे जो भी यूजर्स होंगे, मतलब जो भी उस वेबसाइट्स पे होंगे, आपके कलीग्स होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, उनको आप इन्फॉर्म कर दोगे जो इवेंट का फॉर्म आ चुका है, अगर आपको आना है इवेंट में, तो आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे उसमें इनरोल करेंगे तो वहाँ पे सारा डिटेल्स उनको दिखेगा, जो अगर इवेंट पेड है तो कहाँ पे है, कितने का है, कितने टाइम पे है। अगर अनपेड है तो वो भी तब भी लोकेशन उसमें दिखाएगा जो कहाँ पे है, कितने बजे का है। तो जैसे उसमें इनरोल करेंगे तो एडमिन को नोटिफिकेशन चला जाएगा, और प्लस जो हमारे यूजर उसको भी एक नोटिफिकेशन चला जाएगा जो आपने इनरोलमेंट कर लिया। उनका एक ऑर्डर हो गया, फिर उनका एक ऑर्डर हिस्ट्री हो जाएगा, फिर उनकी जो प्रोफाइल्स वगैरह होंगी, उनकी अपडेशन की सारी फैसिलिटीज होंगी उसमें। फिर जो एडमिन होगा वो बेसिकली सारा कुछ ट्रैक कर सकता है, जस्ट लाइक एक सिंगल यूजर अगर है, कौन कौन सा इवेंट को विश लिस्ट में रखा है। जस्ट लाइक अगर कोई इवेंट 2 मंथ बाद होने वाला है और वहाँ पे बहुत सारे और भी इवेंट्स लिस्टेड हैं, तो एक पर्टिकुलर जो यूजर है वो किसी इवेंट को विश लिस्ट में रख रहा है, जो मेरे पास नहीं है, जब टाइम होगा तो मैं इसे इसमें इनरोल कर दूंगा, तो वो एक विश लिस्ट में रख सकता है, फिर वो इस लिस्ट से उसको रिमूव कर सकता है। फिर जो भी हमारे एडमिन होंगे वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर कोई पर्टिकुलर एक यूजर है तो उसका सारा डिटेल देख सकते हैं, जस्ट लाइक उसने क्या क्या इवेंट्स रखा है, क्या क्या हिस्ट्री, उसका क्या क्या ऑर्डर किया था उसने, प्लस में उसका क्या प्रोफाइल डेटा है। क्योंकि जब एडमिन हमारा होता है तो वो क्या करता है, उसके पास सारे एक्सेस होते हैं, जो भी
जो भी यूजर साइड पे परफॉर्म होता है डाटा, उस सारा चीज वो ट्रैक कर सकता है। तो हम वो सारा चीज इस प्रोजेक्ट में मैनेज करेंगे, जिसके थ्रू आप लोग ये जान पाओगे कि हाउ JWT वर्क कैसे करता है, नोड वैलेट का यूज करके हम मेल कैसे सेंड कर सकते हैं, बैकएंड में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कैसे लगा सकते हैं, ये सब चीज हम उसमें एक्सप्लोर करेंगे। और ये हमारा प्रोजेक्ट फ्रंट एंड हमारा होगा नेक्स्ट जेएस पे, और बैक एंड हमारा होगा नोड और एक्सप्रेस पे। कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हो। सर मुझे नेक्स्ट जेएस नहीं आता, तो रिएक्ट तक मैंने सीखा है, नेक्स्ट कभी एक्सप्लोर नहीं किया। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट होगा ये टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड होगा, बट हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग इसमें इसको बनाएंगे एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, हाउ वी कैन मेक लाइक वी आर प्रॉम्प्टिंग एंड मेक समथिंग न्यू थिंग। सो हम इसको एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर के थ्रू बना सकते हैं, और वैसे ही हम लोग बनाने का इसको ट्राई करेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि हम लोग इन फ्यूचर अगर हमें कुछ भी ऐसा मिल रहा है, जैसे लाइक आप एज अ फ्रीलांसर कहीं पे काम कर रहे हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपने ऐसा कभी बना रखा है जो एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर आप बना सकते हो उस चीज को, तो आप वो चीज इजिली कर पाओगे। तो मैं बेसिकली आपको गाइड्स करूंगा जो कैसे उसको बना सकते हैं एज अ प्रॉम्प्ट देके, या एज अ कोड तो समझना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कोड नहीं समझ सकते हैं, कोड तो हमें समझना ही पड़ेगा, बट प्रॉम्प्ट देके और उस कोड को कैसे मैनिपुलेट करना है ये हम लोग सीखेंगे इसमें। इसका मतलब कोई नीड नहीं है प्रोग्रामिंग का, प्रीवियस नीड नहीं है। आपको बस आपको एक थिंक होना चाहिए जो आपको क्या बनाना है और क्या है आपके पास। जस्ट लाइक अगर आप सोच सकते हो जो आपको ऐसा फीचर्स डालनी है, ठीक है, और जो भी हम अगर किसी भी LLM मॉडल से बात करते हैं या किसी भी मॉडल से हम उससे कोडिंग मांगते हैं, भाई तुम मुझे कोड लिख के दो पर्टिकुलर चीज का, तो वो हमें जो चीज लिख के दे रहा है तो उसको कैसे अप्लाई करना है, राइट, क्योंकि वो तो लिख के बहुत कुछ दे रहा है, तो उसको कैसे यूज करना है वो बेसिकली हम लोग इसमें सीख लेंगे। मैं इवनिंग तक आपको एक PDF शेयर करूंगा जिसमें कुछ डिपेंडेंसी वगैरह होंगी जिसे आप इंस्टॉल कर लेना, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में मैं उसे इंस्टॉल करके भी दिखा दूंगा। और उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे बैकएंड से, देन उसके बाद हम लोग फ्रंट एंड पे मूव करेंगे। अभिषेक, आप भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दो, and we'll sum up this session, or and we'll start from tomorrow. By Ritik will be taking the initial, जो आप शुरुआत के 8 दिन होंगे वो ऋतिक लेंगे आपको, जहाँ पे वो सारी चीजों को बना के, और पैरेलली आप लोगों का भी एक रिपोजिटरी में आपको डेली उनको कोड करके पोस्ट करना होगा आपका पर्सनल गिटहब आईडी में। So, Ankit, I'm like, first of all, I have to answer your question. You don't know about Next.js. So, like, we can continue with the React. Next.js is nothing but a React framework, which is extended feature provide. तो आपको वो सीखो, मतलब आपको बेसिक तो आनी ही चाहिए. You guys cannot escape the basics. तो हम लोग भी जो भी वाइब कोड करेंगे for sure. But you guys should have a basic knowledge of APIs, frameworks, and WebSocket, as I earlier said. So just read the documentation about WebSocket, WebRTC, Generative AI, and I will be like making projects in TypeScript. So are you guys comfortable in TypeScript, or we can continue with JavaScript? We are okay with TypeScript, but if you are teach me in JavaScript, that is better for us. Like it will be better for you, but in future, if you guys like think about future, so it will not be work fine with JavaScript. So you guys have to have like knowledge about TypeScript. And देखो अभी क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे डेवलपमेंट फेज में, बिकॉज यू गाइस डोंट हैव एनी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन लेवल. सो whenever we will start project, you will know कि हम लोग TypeScript यूज कर रहे हैं. So हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट करेंगे, then little bit of TypeScript and while coding for sure. So WebSocket और WebRTC के बारे में आप में से कितनों को पता है? Yes, sir. I done a project in MithilaStack also, socket chat. Okay, anyone else? So, did you receive any documentation about my project, my AI, which will be like a personal assistant for you? Whenever you need, you can talk with the AI assistant, and they will evaluate whatever you wanted. Like if you assume if you say AI, like you are practicing English speaking, or maybe you talk to around. So you talk with AI, and after your session finish, AI will summarize and evaluate your complete conversation and give you the feedback of what you are lacking of, what are your weakness, what is your strength, how can you like improve yourself. So हमारा basically project ये होगा where we will use ChatGPT's real time API. So we can connect with WebRTC, where we'll like chat in real time with AI models. If you guys currently using AI, so what do you do? So you do like you give a prompt to any LLM,
and you wait for the answer. So in the real time, we talk with AI in real time. Just you ask and AI answer your questions. So हम लोग ये implement करेंगे जिसमें कि आपको basic से knowledge होनी चाहिए, Node.js, APIs. So हम लोग जैसे भी Express.js use करेंगे API framework के लिए, or we can go with Fastify API, whatever you guys prefer. So maybe basic will be like Express.js. So we will continue with Express.js, and database we can use like MongoDB or MySQL, Postgres, whatever you guys are comfortable in. Just let us know. So अभी तो brief ये है, and you will receive detailed documentation about the project. Continue with anti-gravity ID and development with real-time ChatGPT and ChatGPT turbo model और Gemini. So that's it. Any और question अगर आपके पास हो तो? No, sir.